A very good evening, and I hope we are quite visible to each other. आज का सेशन है. This is Vineet Pandey. So, hey guys, a very happy new year to all of you. This is Vineet Pandey in front of the camera, behind the camera. घर से लाइव क्लास हो रही है तो सामने भी मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ. तो और जैसे वो गॉड होता है, गॉड इज एवरीवेयर. फिलहाल फ्रंट एंड बिहाइंड इट्स मी. सो टुडे आई हैव डन एन एक्सपेरिमेंट. आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया. दैट आई लेट यू नो व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट. आई यूज माई लैपटॉप टुडे. आज मैंने लैपटॉप का प्रयोग किया और मैंने कमेंट्स को जूम कर दिया so that I can parallel see the comments and I'll try to answer you all. And before we start the session, जैसे एक मैसेज भी आ गया कि सर फुल स्ट्रेटजी चाहिए. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आई विल से दिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा मैं आपके लिए. हैप्पी न्यू ईयर. देखिए, जब छोटे बच्चे थे, व्हेन वी वर किड्स, वी यूज्ड टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, राइट? देन वी स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड ग्रेजुअली यू फील लाइक दैट इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी डे. Technically, our planet has done complete rotation of the sun and we are celebrating. हमारे planet ने एक चक्कर लगाया है, चक्कर पूरा हो गया. क्या है इसमें सेलिब्रेशन करने के लिए? क्या नई चीज है? कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं ना कि अरे क्या हो गया, व्हाई दे आर डूइंग दिस. आई हैव टू आंसर दिस. मुझे आपको आंसर करना है. वी आर इन अ ह्यूमन लाइफ. वी डू नॉट नो अबाउट आवर स्टार्टिंग, आवर एंडिंग. हमें नहीं पता हमारी क्या थ्योरी है, हम कहां से आए हैं, हम लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं या एडम इव के बच्चे हैं या अपने आप बन गए या हम कहीं किसी और सिविलाइजेशन ने भेजा है. वी नीड होप्स. वी नीड अ स्पिरिट ऑफ रीस्टार्टिंग. सो 1 जनवरी इज एक्चुअली नीडेड. ये सेलिब्रेशन जरूरी है क्योंकि हमें हर लेवल पे एक न्यू स्टार्ट करना होता है. जब आपके नोटबुक भर जाती है और आप नई नोटबुक लाते हो, व्हेन यू गेट द न्यू नोटबुक, every student who is writing on the first page of the new notebook, he is trying to maintain a good handwriting, right? जब मैं नई कॉपी लेके आता था तो नई कॉपी पे पहली लाइन, पहला पेज, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी, फर्स्ट पेज ऑफ द पैराग्राफ, आई वांटेड टू राइट इन अ बेटर राइटिंग स्टाइल. ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट फैक्ट दैट ओके आफ्टर 2 pages अगेन इट वाज बैड. बट वी हैव दैट स्पिरिट, रीस्टार्ट, बेटर स्टार्ट. हमें दोबारा शुरू करना है, बेहतर शुरू करना है, अच्छा शुरू करना है. दैट्स व्हाई वी नीड इट. 100% ओवर इंटेलेक्चुअल बन जाएंगे ना तो हम जो छोटे छोटे सेलिब्रेशंस हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, इनको मिस करेंगे. दीज सेलिब्रेशंस, दीज मोमेंट्स, इफ दे आर एक्चुअली मोटिवेटिंग अस, they are needed. As I told you in one of my lecture, my father says, "जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो." The problems, the adversities which inspire you, which teach you, you must adore them, you must love them. Anyway, guys, so once again, a very happy new year, a new start for all of you. We all have seen failures, we all have seen frustrations, we all have seen depressions, but this is the time to fight back. इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप जीत जाते हो. इंपॉर्टेंट ये है कि जब लोगों को लगता है कि ये हार गया, इससे कुछ नहीं होगा, तब आप उठ के खड़े हो जाते हो. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हमारे लिए जो 1 जनवरी है, कमिटमेंट्स का डे है, मेहनत करनी है, नया जज्बा है, नया जुनून है. मेरे अपने रेजोल्यूशंस हैं. इस रेजोल्यूशन के साथ मैं भी आपको बताता हूं मेरा क्या रेजोल्यूशन है. इस बार मुझे एक अच्छा बेटा बनना है. मैं अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहता हूं तो मैं चाहता हूं और ज्यादा टाइम दूं, और ज्यादा इन्वॉल्व हूं. ये मजबूरी है हमारी कि परिंदा जब तक घोंसला नहीं छोड़ता, वो आसमान में नहीं जा सकता. घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन कोई अपने माँ बाप को पीछे नहीं छोड़ना चाहता. मेरा इस बार मन ये है कि जितना ज्यादा हो सके मैं अपने साथ, मम्मी पापा, हम लोग जितना समय निकाल सके निकालें. दूसरा रेजोल्यूशन, मुझे अपने लर्निंग्स पे और काम करना है. अपने आप को पिछले साल से बेहतर बनाना है. तीसरा रेजोल्यूशन, अपने आप को चैलेंज करना है, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालने हैं. अगर एक प्लेयर, क्रिकेटर 50 बनाता है तो उसका मन करता है नेक्स्ट मैच में 100 हो. 100 बनाता है तो नेक्स्ट मैच में उसका मन करता है 150 हो. जस्ट लाइक दैट मेरा अपना मन है. मैं चाहता हूं और मैं प्रयास भी कर रहा हूं उसके लिए, इस बार और बड़ा रिजल्ट निकले, और ज्यादा सक्सेस हो. नाउ 2024 इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी. बहुत सारी वैकेंसीज के लिए हमें क्वालिफाई होना पड़ेगा. खैर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं,
मैं इसमें यहाँ पे देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं। 92 स्टूडेंट्स आर लाइव, 43 स्टूडेंट्स के लाइक आ चुके हैं। अब चलिए काम की बात करते हैं। हमारी बातचीत जो है, जो जरूरी बातचीत है वो हो चुकी है। अब हम चलते हैं काम की बात पे। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, सिमरन, मारूफा, श्रुति, मिस्टर डी आर सर, अन्नपूर्णा, आई कैन सी ऑल योर कमेंट्स। जूम किया मैंने यहाँ से, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलो लेट्स मेक इट फ्रूटफुल। हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। तो ये स्पेशली एक सेशन जो है वो बिगिनर्स के लिए है, और यहां पे आपको ध्यान देना है फॉर दिस बिगिनर्स सेशन। द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी लड़ाई में जाओ, जाने से पहले अपने अपोनेंट को, अपनी एनिमी को पहचानो। एक कहावत है, पानी में उतरने से पहले मगर का पता करो। Make sure when you enter in the water, you know the crocodile. Means when you're going for the battlefield, the first step we have, sorry, the first step we have is syllabus. First step we have is syllabus. Don't worry. I'll be talking about the syllabus. I'll be telling you about the syllabus. Don't worry. We will be going for syllabus thing. We will talk about this. But along with that, I'll be telling you about the other details related to it. Now, let's get back and come back to the first point, syllabus. Note it down. सबसे पहले syllabus को final करो. Now, this is not the syllabus that you have. This is not the syllabus. The syllabus is this syllabus that has been given by UGC. ये UGC का syllabus है. Drama, poetry, fiction, short story, non-fiction, non-fictional prose. Then this particular line. The first 4 units must be tested through. Then these points. So we have this syllabus which is given by UGC. It is with everybody. Everybody has this copy. But I suggest you not to trust, not to rely on this syllabus. Now, let's get back. First thing, make sure your syllabus is properly explained. Properly syllabus को explain होना चाहिए. They said non-fictional prose. Fine. उन्होंने लिखा है non-fictional prose. कहां से कहां तक? Non-fictional prose of what? Indian writings, Greek writings, postmoderns, early age of Middle Ages, or some latest topic, latest literature, electronic literature, cyborg literature, fourth world literature. तो इन्होंने clear नहीं किया, and there we face the problems. So first thing, syllabus को बहुत अच्छे से करो. Maximum students don't know from where to start, what to read, how to read, and they make mistakes. What happens? You read a famous writer, you read a famous book, and then you end up missing the mark. Famous writer की famous book में सबसे खास क्या है, वो हमने मिस कर दिया. This is not about stories. Your friends from science background, your friends from the other backgrounds, they must be telling you what is there in your English literature. You have to read a lot of stories. तुम सिर्फ कहानियां पढ़ते हो, तुम्हें कहानी पढ़नी है, कविता पढ़नी है. It's so easy. No, we don't have to read only stories. We have to understand the crux of the story. They will simply ask you, in Titus Andronicus by Shakespeare, which has macabre style, what is macabre play? What is dance macabre? Now you know that. They'll simply talk about the theater of cruelty. So point is, सबसे पहले note करो for all the new syllabus, all the new students, syllabus. सबसे पहले syllabus पे काम करो. Now, once you have got the syllabus, once you understood the syllabus, and don't worry, I will help you to understand the syllabus. मैं आपको पूरा syllabus समझाऊंगा वहां पे. Second thing that you have to deal with is books. And here you have to remember one important point. You are preparing for India's toughest exam of English literature. Avoid Indian writers. Try to avoid Indian authors. Indian authors को मत पढ़ो. Many of you will feel, sir, don't you respect Indian writers? You think Indian writers are not good? ऐसा नहीं है कुछ भी. Indian writers are really good. I am an Indian. मैं खुद इंडियन हूँ मुझे, और मैं नेट पढ़ाता हूँ.
The point is that if we go for Indian writers, these Indian writers have actually written, ये जो Indian writers हैं, इन्होंने जो लिखा है, they have written it for others, means the students who are preparing for graduation, या तो जो grads में है या जो PG में है. And then we have hundreds of writers, they are writing guidebooks, they are writing support books. जब हमारा टाइम था तो वी यूज टू स्टडी मिस्टर रामजी लाल एंड सम अदर्स. तो इंडियन राइटर्स को अवॉइड करो. अब देखो मैं आपको बताता हूं क्यों. व्हाई टू अवॉइड इंडियन राइटर्स. मोस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिकेशंस आर नॉट सीरियस एंड दे कैन गो विद एनी फैक्ट. बहुत सारे फैक्ट्स गलत होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज preparing for my exams, so my friends started asking me questions. Okay, has given the idea of negative capability? I said John Keats. He said wrong. Then again, who was the poet laureate from this time to that time? I said okay, Robert Browning. He said wrong. Sorry, because Robert Browning. He said wrong. Then someone else, because Robert Browning was not a poet laureate, and he corrected it. I got worried. मैंने सोचा मेरे सारे facts गलत कैसे हो रहे हैं. I asked, which book is that? He said, this is some Meerut publication. Meerut, small city publication. I took that book. There was some basic writer, and the first page of the book was dedicated to Dear Bubbly. So, dedicated to Dear Bubbly, और एक और किताब है by Ivan K. Massey and one more writers there. There are so many mistakes. Indian publishers, they simply write one line. If there is a mistake, a writer is responsible. And then these mistakes will cost you. So first of all, avoid the Indian authors. Indian authors can be read only in Indian literature. दूसरी चीज, in the history of English literature, most of the students ask me, sir, which book is good? So I'll tell you the books. First of all, David Deutsch's thorough knowledge, complete knowledge. If you want in-depth knowledge, अगर आपको in-depth knowledge चाहिए, डिटेल में चाहिए, for Shakespeare, they have 100 plus pages. Shakespeare को 100 pages में बताया, and they have these two parts of the book, and the girth is like this. David Deutsch's is my favorite. Normally, I don't recommend it to the students who come from a small town background because they will be overburdened. नॉर्मली मुझे लगता है कि बाहर से बच्चा है, छोटे गांव से है, क्योंकि मैं खुद छोटे गांव से हूं. पहली बात तो मुझे पता है डर जाएगा इतनी सारी किताब, तो मैं मना करता हूं मत पढ़ो. लेकिन अगर घर बैठे पढ़ना है बिना किसी कोचिंग के, रिपीटिंग वंस अगेन, इफ यू वांट टू क्वालिफाई नेट विदाउट एनी कोचिंग, मेक श्योर यू हैव द कॉपी ऑफ डेविड डचेस. सबसे पहले फॉर डिटेल्स, इट इज टोटली इन डिटेल. तो डिटेल स्टडी डेविड डचेस. देन facts, we want facts, right? Here you can go for William J. Long. William J. Long is good actually for graduation students. It is actually good for graduation students. So sometimes when the student asks me, so suppose if they are coaching students, so I say that you don't have to read any book. कोचिंग में हो तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब मेरे पास ही हो तो मेरे होते हुए you don't have to read this. But sometimes the people are like, नहीं sir, I want to read something. Sir, थोड़ा कुछ दे दो, हाथ में पढ़ते हैं, अच्छा लगता है. Okay, take William J. Long because it is easy, but actually for graduation students. अगर आपका लेवल 0 है, आपको लगता है कि मेरा लेवल बहुत कमजोर है, फिर आप कोई भी इंडियन राइटर की बेसिक हिस्ट्री बुक ले लो, बट फैक्ट्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. Facts will be compromised. Then you can go for R.D. Trivedi. R.D. Trivedi has written one of the most easy and easily comprehensible book, but that is only for graduation students. If you want the easy version, this is good. If you want to have proper knowledge, then these two are compulsory. ये दो तो definitely पढ़ो, for details, for facts. अब मैंने क्या क्या पढ़ा है? For my first preparation as a student, I, along with these two books, see this I read. ये मैंने पूरा पढ़ा. This was my first book to read because I also came from a very basic background, Hindi speaking background.
मैंने आर डी त्रिवेदी पढ़ा. It is also one of my favorite book because I have memories, emotions. इसके साथ मेरे इमोशन है. दिस इज माई फर्स्ट एवर बुक इन कंप्लीट इंग्लिश दैट आई फिनिश्ड. तो एक पूरी किताब पढ़ना, वो भी हमारे यहाँ गांव के इलाके से आना जहां पे अंग्रेजी नाम की कोई बातचीत नहीं होती है ठीक से. So I have that memory, and this is the reason that I still have that book. But it's not good for net. It's good for basic knowledge. Basic knowledge ही अच्छा है. Along with these two books, because this one I read, along with the David Ditches and William J. Long, I went for Edward Albert. So along with these two books, I went for Edward Albert. It is short and they have essay write a kind of answers. They have given a lot of essays like what is Elizabethan poetry, what is neoclassical poetry, what is the difference between mock epic and epic. A question of UPSC this time. ये अच्छा है. इसके अलावा लेगिस खजामिया आई हैव रेड, कॉम्पटन रिकेट आई हैव रेड. इन सब के साथ माय ऑल टाइम बेस्ट दैट इज एंड्रयू सैंडर्स, वन ऑफ द टफेस्ट वन. एंड्रयू सैंडर्स, दिस इज टफेस्ट वन. नॉर्मली इट इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स, तो ये नहीं चाहिए आपको. लेट्स कम बैक फॉर सिंपल थिंग, क्योंकि मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. पॉपुलावस्की की ब्रिटिश हिस्ट्री भी मेरे पास है. Point is, start with David Ditches. Point is, start with David Ditches and William J. Long. David Ditches and William J. Long ले लो, सबसे पहले start करो. Those who have zero background, सर हमें कुछ नहीं आता इंग्लिश में, you can start with R.D. त्रिवेदी. R.D. त्रिवेदी से start कर सकते हो. अब आती है बाकी बुक्स. सर ब्रिटिश हिस्ट्री डन, फाइन, आपने बुक्स बता दिया, ब्रिटिश हिस्ट्री हमने कर लिया. अब आता है इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड लिटरेरी थ्योरी. अब ये कहां से पढ़ें? लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, थ्योरी कहां से पढ़ें? गाइज नाउ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे बेस्ट होता है, यहां पे आई एम रेकमेंडिंग इंडियन राइटर बी प्रसाद. एंड क्यों रेकमेंड कर रहा हूं? क्योंकि इनका इजी है. अदरवाइज इनके अलावा बीबी जैन भी है, वो भी पढ़ सकते हो. बिकॉज इफ यू गो फॉर द वेस्टर्न राइटर्स for literary criticism, they will confuse you. They will actually write देखो western writers wrote the book for book purpose, not for India's net exam. So literary criticism, if you have no idea, no guidance, then B Prasad, easy narration, you can go for that. Literary theory, here I recommend 3 books. I have around 10 to 12 books on this. No doubt Peter Berry literary theory. You can also go for N. Krishnaswamy. If you're not able to understand Peter Berry, N. Krishnaswamy. See, I repeat again, I don't recommend Indian writers. I'm just recommending you because if you have a weak background, non-collegiate, आपको किसी ने ठीक से नहीं पढ़ाया, ये सब चीजें जो है ना, it will help you. ओके, नाउ सी दिस थिंग. यहां पे एक चीज और नोट करनी है आपको. इसके अलावा यू कैन गो फॉर रमन सेल्डन और देयर आर सो मेनी अदर लिटरेरी थ्योरी बुक्स. दीज टू आर गुड. और यू कैन ऑल्सो गो फॉर 129 स्टूडेंट्स आर लाइव. चेक दैट. आपके कमेंट्स रुक गए हैं यहाँ पे. दैट्स व्हाई आई थॉट कि इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल. नाउ सी, यू कैन स्टार्ट विद दिस पीटर बेरी और यू कैन स्टार्ट विद दिस. अब यहां पे जो तीसरी चीज है, द थर्ड थिंग दैट आई हैव टू रेकमेंड, third thing that I'm going to recommend in this portion is, that is very very important, go for papers. पेपर्स पे जाओ. आर्टिकल्स ऑफ इंडिविजुअल थ्योरीज. Third thing that I normally do is, there are so many papers that they have been published on structuralism, they have been published on queer studies, feminism, Marxism, new criticism, stylistics, and सब पे multiple papers published हैं. What do you do? Separate papers, separate articles on individual topic. Take a collection. Suppose you are studying what is new criticism. There are 10 plus, sorry, thousands of papers. Download 5 to 10 papers from Google, from the Western writers. You have 5 papers of a scholar.
Read it. They will give you references, they will give you writers' names, books' names, multiple citings. How a paper is published, a writer does a lot of hard work. एक राइटर, एक पेपर पब्लिशर, रिसर्च स्कॉलर अलग अलग जगह पढ़ के एक पेपर पब्लिश करता है. There are so many papers which are available on Google. Download paper on what is structuralism. Download paper on what is feminism. Third wave of feminism क्या है? Download those papers and have recent knowledge and go for the latest papers. Don't download the paper of 1995. Download 2020, 21, 22, 23 so that you have latest knowledge. Now, theory and criticism we have done. The next point comes Indian writers and Americans. The main one. Because this is again not literature, the real literature will start. अभी real literature आने वाला है. Indian writers M.K. Nayak and Srinivas Iyengar. If you have these two books, you don't need any help. M.K. Nayak and K. Srinivas Iyengar. Read these two books. But apart from this, remember this, that in Indian literature, Indian aesthetics, Indian modern theatre, Indian Dalit literature, Indian translation literature, these are also the topics. And Indian post-colonials. Plus, Indian literature, South Indian literature is being asked in exam, and this is the part of fourth world literature. C.S. Lakshmi, O.P. Vijayan, Perumal Murugan, they have been asked in exams. ये सब exam में आ चुके हैं. So you have to go for these things. Then comes American. In Americans, I have an opinion. यहाँ पे एक simple opinion है. Go for 25 big reads. Right now, I'm not able to recall that American writer वाला thing. कौन सा book है? एक basic shortcut बता रहा हूँ. 25 big reads. It is a list of top 25 American books. Select these top 25 American authors, read them. Because American literature is divided in Americans and Afro-Americans. फिर Afro-Americans, Africans, उनकी अलग-अलग books हैं. And these names are really tough for me. I don't remember those names. तो मैं आपको कभी या तो I'll arrange the photographs of the books and I'll put it here. क्योंकि उन सारी बुक्स के नाम तो मुझे याद नहीं है. ओके, ये सब आप देख लो. इसके बाद आपका कल्चर स्टडीज है, लिंग्विस्टिक्स है, पेडागोजी है, इंग्लिश इन इंडिया है. एंड आई वुड रेकमेंड go for the latest papers published. I have around 12 to 13 books of culture studies, 20 plus books of post colonials. So one day, this is a commitment. I'll put all those books here and you can see and click. आप वो देख के क्लिक कर सकते हो. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, that is, okay, we have to go for this point. Next point we have is timetable. Start with these books. तब तक इन books से start करो. This will help you. These are the books which are going to help you in a proper way. Next point we have is timetable. Please remember that when you make timetable, give proper time to paper one. The biggest mistake normally the students are doing is that they do not give time for paper one. CUET के लिए live class करेंगे. I will go for that. CUET के लिए live class that I'll do. Check that. Now, timetable paper one. So first of all, there are two types of things. First thing is first and most important thing is that in your timetable, you should have separate time to study. See, first of all, you have to study. Sit like an ideal student
Focus on the content, read it in the depth, and don't think about your exam. Just read it, try to ponder over it, think about it, and try to get the idea. यानी पहली रीडिंग सिर्फ पढ़ने के लिए करो, नॉलेज के लिए करो. सिर्फ ये सोचो कि मुझे पढ़ना है. जैसे मैं अपना बताता हूँ क्या होता है. सपोज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स. अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. देन फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज I'll just make sure that there is no sound distraction, no trouble, and I'll take my pen or pencil. I start underlining, and in underlining, I'll pick some lines, phrases which are confusing me. I'll focus on those, and I'll break the paragraph or the page in small parts to understand that thing. Suppose I couldn't understand, I will check the same topic फ्रॉम 2 3 4 सोर्सेज. एक जो चीज समझ नहीं आई वो 4 5 जगह से पढ़ लूंगा. कौन कौन सी जगह? गूगल हैज हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स. रीड इट. द मोर यू रीड द मोर यू लर्न. जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे. फर्स्ट थिंग, टाइम टेबल होना चाहिए जस्ट फॉर स्टडी पर्पज, इन डेप्थ स्टडी. मेरा टाइमिंग होता था इन डेप्थ स्टडी का दोपहर एंड शाम को. सिर्फ पढ़ना है. नॉर्मली having a chair, a table, and also that lamp, 400 300 rupee lamp, focusing on the page. I would read it in the evening, afternoon, or by night because I was early riser. Then comes notes making. You have read, but when will you make notes? And if you are reading to make notes only, if you take a book and you have to read it only to notes, for notes making, you are going to do the misreading. Because the main idea is make notes. No, first understand the concept. Notes is second step. Notes बनाना दूसरा step है. पहले समझो, अब आता है notes making. So what you can do, you can have a pencil, you can have a कुछ चल रहा है वहां पे and you felt this thing that this line is good, this line is to be highlighted, this paragraph is good. Just highlight that thing, just connect that thing, and when you go for notes making, select those lines, those paragraphs, and make notes accordingly. But remember, reading and notes making should not go parallel because your competitive mind, your scientific mind will focus on making notes, and then if your concepts are not clear, you will miss it. अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपका पॉइंट मिस हो जाएगा. आई होप माई वॉइस इज देयर एंड कोई इशू नहीं है यहाँ पे. आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं अकेले कर रहा होता ना सब कुछ, तो ये बहुत बड़ा सेशन होना चाहिए कायदे से टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. ओके, आई थिंक आवाज है. हाँ है, आई कैन हियर माई सेल्फ. ओके फाइन. नाउ द थर्ड थिंग, you have made the notes, you have done the proper study. Time to revise. Time to revise. In Delhi, I think I have passed around 12 years. There are so many places where I still don't know the route. I have to use the Google. 12 साल से दिल्ली में घूम रहा हूं, रास्ता नहीं याद है. क्यों? Because that's not my regular way. But I don't forget the route of my office. I don't forget the route of the mall I prefer. I don't forget the route of the places for shopping. Maybe it's my favorite places of dinner. Why? Because I'm repeatedly going. प्रैक्टिस करना है और उससे पहले चाहिए रिवीजन. करत करत अभ्यास, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात, पाथर पड़त निशान. जैसे कुएं की रस्सी पत्थर को काट देती है. पानी तोड़ देता है यार, पानी पत्थर को मुलायम कर देता है. तो लगातार कुछ होगा, दैट विल बी काउंटेड. इट मीन्स अब आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है. हैव स्टडीड, यू हैव मेड द नोट्स एंड डू द रिवीजन. इफ यू हैव डन क्वालिटी स्टडी, यू विल हैव क्वालिटी नोट्स. क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी नोट्स. एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं. कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल परसों. उसमें मैंने बोला आंसर की से रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग थंबनेल था. बच्चों के बड़े मैसेज आए. सम स्टूडेंट्स वर नॉट हैप्पी. अरे सर, आपने तो कंफ्यूजिंग थंबनेल दे दिया, हमारी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, हम बहुत दुखी हैं. सम ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने रिप्लाई किया. मैंने कहा, डिड यू वॉच दैट? यस सर. आई सेड वॉच अगेन. दोबारा देखो.
इफ यू वॉच दैट वीडियो, पहली 2 मिनट में मैंने ये बोला है कि जानबूझ के नोइंगली आई हैव यूज दिस थंबनेल टू टेल यू अबाउट समथिंग. सो कुछ बच्चों ने उसको ध्यान से नहीं देखा. दे मिस्ड इट. इट मीन्स the thing is in front of you, but you didn't focus and you could not understand, you could not analyze those things. This is what we need. Focus study. Comprehension aata hai exam mein, right? Unseen paragraph. Why it's so tough? The paragraph is in front of everyone. You can read the paragraph, I can read the paragraph. The questions are being asked from the paragraph. Then still people make mistake. Why? Because of this in-depth study, understanding. You must work on your comprehension. You must work on your understanding level. If you have done deep study, your notes will have quality. If your notes have quality, your revision, it will be a worthy revision. My idea, I am double JRF. My idea was of revision was 3 to 7 early morning, 3 to 7. So I did my study, I made my notes, and when it comes to revise, I personally appreciate and love this timing, 3 to 7. Early morning, 3 to 7. 4 hours. Now, please just be honest and tell me. You are studying to qualify. It is a fight for you. My first net was a fight for me. Fight of survival, fight against poverty, fight against anxiety and depression that your son is not doing anything, your son has no future, your son is a shame. मुझे लड़ना था उसके खिलाफ, मेरी जंग थी. दिन भर पढ़ना, studying, making notes for the day, and every morning, I think rarely मैंने 2-4 क्लास मिस किया है, रूटीन मिस किया है. 4 hours just revision. 3 a.m. 90% world, sorry, the Indians, they sleep. 4 hours where I would not even get disturbed. Normally other people would get up by 6, 7, or they were like studying for 3 to 4 a.m. So they would get up by 11 a.m. I would study peacefully, no trouble. I would have pain in my eyes. होता था, दर्द होता था, नींद आती थी. गद्दा किसको अच्छा नहीं लगता सर्दी में? सर्दी में रजाई से बाहर आके पढ़ना, that is a fight. That is a fight. और मुझे मजा आता था to defeat that. गरम गरम रजाई है, no? You know, you are so much comfortable and cozy in your bed and you don't want to leave your mattress. It is chilling cold. And there you have to win that thing first. पहले उसी को जीतो. टेबल पे आके बैठो, जो प्लास्टिक और लोहे की चेयर है, उस पे बैठो. 4 hours आपका रिवीजन है. You have done your revision for 4 hours. From 30 days in a month, if you're preparing for net exam 6 months, 180 days, 180 days में चलो 2-4 दिन नहीं भी हो गया, 150 days, 4 hours revision, 150 days. Deep study, quality notes, 150 days, and this. Around 600 hours. 600 hours, just do that. आज 1 जनवरी है ना, अपने आप को बोलो विनीत पांडे बनना है ना. कई लोग बच्चे कहते हैं आई वांट टू बी लाइक यू. ये चलो मेरी तरह सक्सेस चाहिए, जॉब चाहिए, पैसा चाहिए. हाँ, पैसा मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है. अभी पहले फीस भरने का पैसा नहीं था, खाना खाने को ठीक से नहीं होता था, अभी है. बट उसके लिए क्या ये 600 घंटे निकालोगे? ये 600 आवर्स वो वाले जहां दुनिया सोएगी, जहां दुनिया सोएगी, तुम्हारा बेड तुम्हें बुलाएगा कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, ठंडा है. गट्स, यू विल हैव इट, मिलेगा. अब इसके बाद देखो, तुमने ये भी किया. अब इसके बाद आता है प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गो फॉर प्रिपरेशंस. यू कैन ऑल्सो डू द प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम. जब लास्ट में आपका एग्जाम रह जाता है 30 days, 60 days, 1 month or 2 months, here you have to go for practice. I recommend go for PYQ solutions only in last 30 days. जो आपके previous years questions होते हैं, PYQs last के 30 days में सबसे best होता है. Why? Why the PYQs in the last 30 days? Because you have done everything, so you will be able to handle the question. You're prepared to face that exam. आप उस एग्जाम को फेस करने के लिए रेडी हो चुके हो. यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम. सो व्हाट यू हैव टू डू? PYQs करना है.
दीज आर द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर. इससे पहले जो मैंने आपको बताया रोड मैप है, दैट्स रोड मैप. इफ यू आर मोटिवेटेड, हाफ ऑफ द बैटल इज वन. आधी लड़ाई तो आप जीत गए. नाउ व्हाट टू डू? This is your current net syllabus. Okay. So this is your current net syllabus. There are chances कि syllabus change हो जाए. अंकिता का एक क्वेश्चन है, अनिका का. कुछ टीचर्स बोलते हैं कि शुरू से ही करो पीवाईक्यूज. सबसे पहले पूछो कि उनके जेआरएफ हैं क्या, उनके खुद के जेआरएफ पता करो. जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों को पढ़द. कबीर जी ने कहा है जिसका गुरु अंधा होगा, चेला तो कंप्लीट ब्लाइंड होगा. इफ योर टीचर इज ब्लाइंड, द स्टूडेंट गोइंग टू बी ब्लाइंड. सपोज यू आर न्यू स्टूडेंट, यू आर इंट्रोड्यूस टू अ न्यू सिलेबस. आज तुम्हारी क्लास है, विनीत पांडे टीचिंग. सर दिस इज ड्रामा. ओके sir, but I am from a village, I don't know what is drama and novel, I don't know what types of novel, what types of drama. My dear student, go back, आज जाके करो PYQ. Okay sir, you are the best teacher. PYQ देख के चक्कर आ जाएगा. What is this? I am not able to understand. I don't even know the drama. PYQs is talking about closet drama. Adrian Kennedy's one act drama. Sir, it is impossible, I can't do that. डर जाओगे आप. तो जो भी टीचर आपको कह रहे हैं ना कि पीवाईक्यू सबसे पहले शुरू कर दो, या तो उसका बाई चांस नेट क्वालिफाई हुआ है, या फिर उसे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, फिर वो पेपर 1 से पास हो गया होगा. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता है. They perform in paper 1 because they have prepared for SSC, they have done B.Ed. So these students are damn good. PYQs is like going for the exact fight. So how do you want to go to the battlefield? With no swords, no arms. लड़ाई में जाना है तो तलवार लेके जाओगे कि बिना तलवार चले जाओगे? सपोज तुम आए मेरे पास कराटे सीखने और मैंने कहा नहीं नहीं पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो. पहले ही दिन मैंने तुम्हें भिड़ा दिया किसी से, धुलाई हो जाएगी अच्छी वाली. PYQs must be in the last, सबसे लास्ट में होना चाहिए. Now see, now talking about this, guys, first of all, see the first 4 units. These first 4 units are supposed to take 40 questions. Are supposed to take 40 questions. And again, the ratio is not fixed. मिनिमम 40 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा 60 भी हो सकता है. इफ दे टेक 40 क्वेश्चंस ओनली, देन द पेपर बिकम्स टफ. इफ दे टेक 60 क्वेश्चंस, समहाउ इट बिकम्स इजी. अब क्या पढ़ना है, व्हाट टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय सजेशन, either you take separate books for drama and poetry and all these things, और एक सिंपल इजी है पॉइंट है. बिकॉज आई हर्ड कोई इस तरह से पढ़ा रहा है, सिर्फ ड्रामा 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 पढ़ा रहा है, फिर सिलेबस का पॉइंट, यूनिट खत्म. थैंक यू स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ, चलो आज मैं आपको पोइट्री पढ़ाऊं. नाउ आई विल टीच यू पोइट्री. फाइन सर. सर आज आप फिक्शन पढ़ाओ, शॉर्ट स्टोरी. फाइन. स्टूडेंट इज हैप्पी. व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है. देखो एक कहावत है, अंधों में काना राजा. तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुमसे थोड़ा सा जिसको ज्यादा आता है ना, वो बॉस है. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट क्या करेगा, बेचारा बच्चा जो है इनोसेंट है. स्टूडेंट को लगेगा हाँ सर हमारे टीचर ने ड्रामा पढ़ाया, यूनिट 1 खत्म किया, फिर यूनिट 2 खत्म किया, फिर यूनिट 3 खत्म किया. नाउ टेल मी दिस, टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट, नोबेल अवार्ड 1948, कौन सी कैटेगरी में आएगा? चलो मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूं, आंसर्स. आई विल सी योर कमेंट्स. टेल मी, टी.एस. इलियट इनमें से कौन सी यूनिट में आएगा? टेल मी इन विच यूनिट टी.एस. इलियट विल बी एडेड. अनिका हैज आंसर्ड पोइट्री. बहुत बढ़िया अनिका. एक ने लिखा है एक स्टूडेंट पढ़ाती है मेरी ऐसे. अगर आपको यूनिट वाइज कोई पढ़ा रहा है तो बेवकूफ बना रहा है. टेक दैट स्क्रीनशॉट, टेक दैट स्क्रीन वीडियो. अगर आपको कोई अलग अलग यूनिट करके पढ़ा रहा है, somebody is teaching you with the separate unit standard, it's a wrong teaching. Ask the same question. T.S. Eliot in which group, in which category? एक ने लिखा है all the groups except drama. नज्म, नज्म स्मृति.
स्मृति, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू मेड अ मिस्टेक. रिया शर्मा ने लिखा सर सिर्फ पोइट्री एंड ड्रामा इन दोनों में आता है. कहा है मेरे वाले स्टूडेंट? कहा है मेरे वाले स्टूडेंट जो ऑनलाइन या ऑफलाइन के स्टूडेंट है? साक्षी शर्मा, ऑल. यस, ऑल. ड्रामा. T.S. Eliot, famous drama Murder in the Cathedral. Sir Thomas A. Becket, Four Tempters, story of 2nd December 1170. The reference background of chorus song, famous drama Murder in the Cathedral. इसमें आता है. Poetry, Wasteland, Hollow Men, love song of J. Alfred Prufrock. In the room, women come and go, talking of Michelangelo. We are the stuffed men, we are the hollow men. No, I do not want to turn back. This is how the world ends, not with a bang, but with a whimper. T.S. Eliot, who is the third walking by our side. ड्रामा में भी आता है, पोइट्री में भी आता है. अब आती बात फिक्शन की. T.S. Eliot has tried his hand in novel writing. Confidential Clerk, क्या बोलते हैं, Cocktail Party, Family Reunion, and some other works. He has tried to write that also. अब आता है नॉन फिक्शन. T.S. Eliot has written the Metaphysical Poets, Hamlet and His Problems. T.S. Eliot has written hundreds of non-fictional works. T.S. Eliot सब में आता है, सब में आता है. Now, अरे विनीत सर, एक राइटर का एक्सेप्शन दे दिया, क्या हो गया विनीत पांडे सर? क्या कर रहे हो आप? दूसरे टीचर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को भी. Why are you doing this, sir? Why are you taking just one reference of T.S. Eliot? क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन, शेक्सपियर पढ़ा है ना? बेन जॉनसन. किसमें आता है? दोनों, तीनों. ड्रामा में भी आते हैं, पोइट्री में भी आते हैं. तीनों ड्रामा में भी आते हैं, पोइट्री में भी आते हैं. थॉमस नैश ड्रामा में भी आता है, फिक्शन में भी आता है. W.B. Yeats पोइट्री में भी आता है, नोबेल अवार्ड 1923. W.B. Yeats ने ड्रामा भी लिखा है, काउंटेस कैथलीन भी W.B. Yeats का फेमस वर्क है, वहां पे भी आता है. अच्छा, नॉन फिक्शन भी है W.B. Yeats का, आयरिश लिटरेचर पे, फाउंडर ऑफ एबी थिएटर, आयरिश लिटरेरी रेनेसां, वहां पे भी आता है. अब देखो, फिर आप बोलोगे ना कि विनीत सर जो है फैक्ट्स के साथ बात करते हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है यार, कुछ तो सीखा ही है. देखो, दोनों फेमस राइटर हैं, दोनों फेमस राइटर हैं. D.H. Lawrence is famous for fiction. Lawrence is famous for short stories. D.H. Lawrence has written poetries. लॉरेंस पहले पोइट था, यहां आता है. जेम्स जॉयस फेमस फॉर मॉडर्न फिक्शन, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज. जेम्स जॉयस ऑल्सो हैज रिटन आयरिश पोइट्रीज. सब आता है. टेनिसन वॉज अ पोइट एंड अ ड्रामेटिस्ट. मॉड, बेकेट, हेराल्ड, क्वीन मैरी. Coleridge has written drama. How many of you know that? Yes, romantic writer S.T. Coleridge is a poet and a dramatist and a magazine editor. In short, my dear students, कोई भी तुम्हें अलग अलग पढ़ा रहा है तो तुम्हें बना रहा है. इसलिए कहता हूं, चूज योर कोचेस वाइजली. उनका कोई फर्क नहीं पड़ना. फेल होने के बाद कोई रोने के लिए फोन करता है, दैट ओके आई वांट टू क्राई विद यू. पूछो ये क्वेश्चन अपने टीचर से कि सर एक बात आओ, जब ये सारे राइटर्स सब में कनेक्टेड हैं तो आप हमें सेपरेट अलग अलग कैसे पढ़ा सकते हो? क्या एक ही राइटर बार बार पढ़ाया गया है? शेक्सपियर अलग से पढ़ाया, फिर शेक्सपियर को पोइट्री में भी पढ़ा दिया, ऐसा किया क्या? नाउ द पॉइंट इज व्हेन यू स्टडी, चलो छोड़ो अब दूसरे का, ठीक है. ये सारा पढ़ने का सिंपल सा तरीका है. स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, 450 एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करो एंड गो टिल 1980s पोस्ट मॉडर्न्स एंड कंटेम्पररी लिटरेचर इन एन ऑर्डर. जब कभी ऑर्डर बनाने में दिक्कत हो, व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड एन ऑर्डर, द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. स्क्रैच से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, यहां से 450 के बाद फिर एलिजाबेथन जाओ 1558, फिर 1660 पे जाओ, देन 1837 एंड ऑल, एंड धीरे 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 यू हैव टू गो फॉर दैट.
सर बाकी कैसे पढ़ना है? WW वर्ल्ड वॉर ड्रामा, ये है बहुत सारा है, बॉर्डर प्ले भी है, वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर प्ले है, बहुत बढ़िया समरीन, प्राउड ऑफ यू। इवन विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन प्ले, ड्रामा लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बॉर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए डेविड डेचेस ले लो। In David Deutsches, you will find Shakespeare as a dramatist, as a poet. In David Deutsches, you will find Christopher Marlowe as a poet, as a dramatist. वहां पे यूनिवर्सिटी विट्स भी मिल जाएंगे, प्लस प्रोज राइटर्स ऑफ एलिजाबेथन्स, थॉमस नॉक्स मिल जाएगा, रिचर्ड हकलेट मिल जाएगा, इनके साथ साथ सैमुअल परचाज मिल जाएगा, यानी कि प्रोज राइटर्स या नॉन फिक्शनल राइटर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेविड डेचेस, विलियम जे लॉन्ग, इनसे स्टार्ट करो। एंड वन मोर थिंग आई विल रिपीट, अगर आप क्लास में हो, ऑफलाइन बैच स्टूडेंट हो, ऑनलाइन बैच स्टूडेंट हो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मेरा काम है। आप मुझे इस चीज के पैसे दोगे ना, तो ये मेरा काम है, इनसे ज्यादा बुक्स है मेरे पास। नाउ लेट्स गेट बैक टू अदर पॉइंट्स। अब हम बाकी पॉइंट्स पे चलते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, न्यू ईयर का सेशन है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थोड़ा सा घर पे लाइव क्लास है, इट्स अ लाइव क्लास एट होम, सो आई एम ट्राइंग, maybe if I'm missing some point, just ignore it. Okay, now let's get back to this point. Now we are at this point. Here people make mistake, यहां पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। The first 4 units, I hope it is visible for you. मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, yes you all can see that. The first 4 units, अब ध्यान से देखना दोस्तों, first 4 units must also be tested through comprehension passages, यानी कि जो आपके comprehension passages आते हैं वो इन फर्स्ट 4 units से आएंगे, ड्रामा से आएंगे, पोइट्री से आएंगे। नॉर्मली इट इज पोइट्री एंड ड्रामा नाउ, और सॉरी पोइट्री और द नॉन फिक्शन और फिक्शन, प्लस व्हाई, टू असेस योर क्रिटिकल रीडिंग, ये पता करने के लिए कि आपकी रीडिंग कैसी है। सो डीप रीडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का जस्ट सिंगल एक सिंगल साइंटिफिक तरीका है, द मोर यू रीड द मोर एनालिटिकल स्टैंडर्ड्स यू हैव। जितना रीड करोगे, योर ओन अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर जोनाथन स्विफ्ट, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी ड्रैपियर्स लेटर्स करके, किसी को समझ नहीं आई, मॉडर्न राइटर्स ने समझा उसको। सो यू मस्ट हैव दैट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये समझने के लिए। अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आपका थ्योरेटिकल थिंकिंग कैसा है, और राइटिंग स्किल। फिलहाल इट्स नॉट डिस्क्रिप्टिव, तो राइटिंग छोड़ो। फर्स्ट 4 units को यू हैव टू गो फॉर डीप रीडिंग, because they are not going to ask you basic question, who is father of Shakespeare, what is the last line of Finnegan's Wake। वैसे एक क्वेश्चन है एग्जाम में, Finnegan's Wake का लास्ट वर्ड पूछा हुआ है। Now see, you have to go for comprehension passes, critical reading, critical thinking. It means, my dear students, when you study these things, ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे आपको ठीक से पढ़ना है, you have to study it in a proper way, अच्छे से पढ़ना होगा, in depth knowledge, and then अब देखो यहाँ पे क्या आता है। Now we have these points। अच्छा है हमारा सेशन बड़ा होगा, लेकिन ये साल का पहला सेशन है तो बड़ा सेशन होना चाहिए। ऑल आई नीड फ्रॉम योर साइड इज लाइक्स। आपके लाइक्स ही मेरे लिए थैंक्स है। अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है, इफ इट्स गाइडिंग यू, इफ इट्स हेल्पिंग यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक। ओके, नाउ अब आता है, ओके हाँ, वन मोर थिंग, एक कैसे मिस किया, नहीं मिस करना है, दैट द सेम थिंग आई एम गाइडिंग यू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको नहीं मिस करना है। These 4 units will cover पढ़ो क्या लिखा है। You all can see there is something that I have circled. There is a line, a phrase I have circled. If you can see that circle, just write it in the comment. क्या दिख रहा है आपको? आपको मैं बहुत पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पढ़ाने के लिए मैंने बोर्ड घर पे लगवाया है,
घर पे बोर्ड लगवा लिया मैंने, मेरा काम ही है, टीचिंग ने मुझे आइडेंटिटी दी है, तो मैं बहुत पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. ऑल लिटरेचर्स, इदरीस हैज रिटन ऑल लिटरेचर्स इन कैपिटल. इदरीस का कमेंट आ गया है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो. देखो हाउ द सिलेबस ट्रिक्स यू, हाउ द सिलेबस फूल्स यू. अभी देखो अब क्या चीज हुई है, ध्यान से देखना. इट्स क्लियर, all literature is clear. Now see this. When we talked about these four references, what did I say? Go for David H. Go for William J. Long, right? मैंने बोला ना, क्योंकि in the flow I didn't focus that line because for me syllabus is not a big thing. मुझे वैसे ही आता है बहुत कुछ. लेकिन गलती क्या थी, चलो गलती मानते हैं कैमरा पे. We talked about British history of English literature. हमने किसकी बात की? British history of English literature. So for British history of English literature, we have W.J. Long, we have David H. Compton Rickett, Legis Kazamia, Andrew Sanders, सब है हमारे पास. लेकिन ये क्या कह रहा है? What is he saying? This syllabus making person. All literatures in English. What is all literature? What is all literature? All literature means not British. Everything, the world literature in English. इंडिया के राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल द इंडियन राइटर्स हु आर राइटिंग इन इंग्लिश? इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, फ्रेंच लिटरेचर इन इंग्लिश, रशियन लिटरेचर इन इंग्लिश, जर्मन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इटालियन, साउथ एशियन. आई टीच दीज थिंग्स. पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं. मोनिका अली पे क्वेश्चन है, बांग्लादेश की राइटर है. हामिद कुरैशी, उस पे क्वेश्चन है. हनीफ कुरैशी, उस पे क्वेश्चन है. मोहसिन हामिद पे क्वेश्चन है. हु आर दीज राइटर्स? दे आर पाकिस्तानी राइटर्स. देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्सिकन ऑथर्स. वेनेजुएला से जो है राइटर, उस पे क्वेश्चन है. कोलंबियन ऑथर्स पे क्वेश्चन है. नॉर्वेजियन ऑथर पे क्वेश्चन है. इन शॉर्ट, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर राइटर्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जर्मन ड्रामा? फेट थिएटर बोलते हैं. एपिक थिएटर भी होता है जर्मन में. दो ड्रामा है, फेट थिएटर, एपिक थिएटर. वेल्टांस सॉन्ग करके जर्मन नेम है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट जर्मन पोइट्री दैट इज एक्चुअली डीलिंग विद होलोकास्ट लिटरेचर? ये पढ़ाता हूं क्लास में, मैं ये सब पढ़ाता हूं. होलोकास्ट के मेरे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे. व्हाई आई गिव फ्री लेक्चर्स ऑन यूट्यूब? इट इज द पार्ट. जस्ट लाइक दैट, नॉन फिक्शन फ्रॉम एनीवन, सबने लिखा हुआ है. ऑल द थियोरेटिकल राइटर्स. इन शॉर्ट, रशियन लिटरेचर पढ़ना है. व्हाट इज रशियन रियलिज्म? व्हाट इज द आइडिया ऑफ सुपरफ्लुअस मैन? 2 क्वेश्चंस इन सेम पेपर. इन शॉर्ट, आपको यहां पे वर्ल्ड लिटरेचर देखना है. इट इज नॉट ओनली ब्रिटिश हिस्ट्री, एंड दिस इज वेयर द पेपर बिकम्स टफेस्ट. तो अगर आपको कोई पोर्शन वाइज ड्रामा पढ़ा रहा है, पोर्शन वाइज पोइट्री पढ़ा रहा है, तो उनसे ये पूछना, आस्क योर टीचर दैट इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस, and also say that Vineet sir did not make that syllabus. These first 4 units must be tested through the comprehension passages, critical readings, critical thinking, writing skills. These 4 units will cover all literature in English. So why are you not teaching us French drama? Online students, offline students, Molière पढ़ा है, Corneille पढ़ा है. French drama, remember? Naturalism in theater, Emile Zola 1881 पढ़ा है ना हमने. रशियन रियलिज्म पढ़ा है, 19th सेंचुरी. ऑस्ट्रेलियंस एनवायरमेंटल लिटरेचर पढ़ा है हमने, बुश लिटरेचर पढ़ा है. बॉगलैंड पोइट्रीज ऑफ आयरिश राइटर्स, सीन ओ कैसी, जे एम सिंज, देन दिस फेमस राइटर जेम्स जॉयस, डब्ल्यू बी ईट्स, लेडी ग्रेगरी, और उसके साथ एक और नया राइटर है 1995, सीमस हेनी. ये सब हमने कर रखा है. वी हैव डन ऑल दीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 4 यूनिट्स में वर्ल्ड लिटरेचर आएगा. So don't just think that, okay, it is only British history. No. Now let's get back to this. अब हम बात करते हैं बाकी राइटर्स की. अच्छा है, घर पे बोर्ड है ना, तो आई हैव दिस कंफर्ट टू टीच यू इन प्रॉपर डिटेल्स. अब देखो, आई नो सेशन बड़ा है, दिस इज अ लॉन्ग सेशन. नॉर्मली मैं 40-45 मिनट तक सेशन लेता हूं, बट इट विल हेल्प यू.
Debashish बहुत बढ़िया. See, Debashish has written Molière inspired restoration comedy. Very good. Resigned by neoclassical tragedies. Very good. Now see, language. If anybody is teaching you phonetics on the name of linguistics and कोई आपको phonetics पढ़ा रहा है, monophthongs, diphthongs, vocal cords, आपको बेवकूफ बना रहा है. This is not in the syllabus. It is not purely linguistic, it is language theory. Most of the students are saying, sir, linguistic पढ़ा दीजिए, linguistic पढ़ा दीजिए. Guys, linguistic है ही नहीं. It is language pedagogy, it is language theory. आंखें अपनी जूम करो, देखो. Basic concepts. Dada theory, yo hi ho theory, Lala theory. First language acquisition theory, Stephen Krashen, input hypothesis, ये सब यहाँ आता है. ये सारी theories आपकी आएंगी. यहाँ पे जो आपको सैपिर वॉर्फ एनालिसिस वगैरह आएंगे. लैंग्वेज के साथ इंग्लिश इन यूज, एक फुल स्टॉप लगा के इंग्लिश इन यूज लिखा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड सिलेबस यू विल बी एबल टू क्वालिफाई लाइक मी. मैं बार बार क्वालिफाई कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि आई नो द सिलेबस. वो क्या पूछते हैं. व्हाई दे हैव रिटन सेपरेटली इंग्लिश इन यूज. कौन सा इंग्लिश? विच इंग्लिश? लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा इन यूज? नो माय डियर फ्रेंड. लिंगुआ फ्रैंका, English as a language. English as a language, which is called lingua franca. 90% students को नहीं पता lingua franca क्या होता है. बहुत बेसिक है. A language which is language of official use, language used in offices. Lingua franca. English in India is a lingua franca. थोड़ा लॉन्ग सेशन है तो मैं भी अपना मुंह साफ कर लूं. It is a Japanese style. Hide the face. Face must shine. Language, lingua franca. यहाँ पे आपके concepts आते हैं. What is cliche? What is register? What is pedgin? What is creole? Creolization क्या है? Idiolect, ideoglossia, heteroglossia. इस बार पेपर में क्वेश्चन था ना heteroglossia. ये सब आपके यहाँ पे आते हैं. I hope you have got that. Language theory सारी यहाँ आएंगी. And then English in use. It is a genuine standard thing. मैंने कपिल कपूर सर की किताब पढ़ी. कपिल कपूर सर वाज अ प्रोफेसर ऑफ जेएनयू. इंग्लिश इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. अब देखो, हियर इट वाज थ्योरेटिकल. ये थ्योरेटिकल अप्रोच था. नाउ कम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री. द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग हिस्ट्री English in India, we say Macaulay, but there are people before Macaulay. Even Raja Ram Mohan Roy is called the first person to support English education in India. Then there is William Pitt. Then हमारे पास सैडलर कमीशन है, हम्बोल्ट है, बहुत सारे नए नए कमीशन है, हार्टॉग है. Hundreds of commissions are there. So first of all, English in India, उसका क्या इतिहास है? It's easy. ये easy topic है because this is history. You just have to read all the 15 to 20 commissions, remembering important dates. इसके बाद आता है इंग्लिश का इवोल्यूशन कैसे हुआ. व्हाट इज बाबू इंग्लिश, व्हाट इज बटलर इंग्लिश, व्हाट इज द रोल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम. व्हाट इज द आइडिया ऑफ एनएस प्रभु. इंग्लिश हैज बिकम अ काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म, ईएलटी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग. ये आता है इवोल्यूशन पे. एंड देन कम्स फ्यूचर्स. क्या आपको पता है बिजनेस इंग्लिश, मरीन इंग्लिश, एविएशन इंग्लिश, न्यूक्लियर इंग्लिश, ग्लोबिश इंग्लिश, हिंग्लिश, चटनीफिकेशन, ये सब आता है. ऑल दीज थिंग्स आर टॉट हियर. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मैं प्रॉपर बहुत अच्छे से डिटेल दे रहा हूं. लकीली आई गॉट द बोर्ड एट होम इन द लास्ट फ्यू डेज, 2 months. फर्स्ट थिंग दोस्तों, एक चीज बहुत अच्छे से है, ईमानदारी से आपको एक्चुअली पता होगा क्या पढ़ना है. विद दिस वीडियो यू विल एक्चुअली नो व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है. देन कम्स कल्चरल स्टडीज. स्टूडेंट्स आर स्केर्ड, सर कल्चर स्टडी, सर कल्चर स्टडी, बड़ा डर लगता है. क्या है कल्चर? देखो, पहले क्या था? इंडिया, अफ्रीका, चाइना, जापान. अभी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज हैव कैप्चर्ड द वर्ल्ड एंड इट हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज. पाकिस्तान में भी चॉकलेट्स बिकती हैं. कैडबरी चॉकलेट का नाम कुछ और होगा. इन हियर व्हेन दे प्रमोट कैडबरी दे से इट इज दिवाली, कुछ मीठा हो जाए. In Pakistan, they would say it is Eid, kuch meetha ho jaye, it is something else. In Africa, they will say it is something else. Let's have some sweets. In short,
Globalization has made the world global village, and now what they are understanding is culture, subculture, high culture, low culture, pub cultures, parallel culturals. So culture studies is not a tough thing. The only problem in India with culture studies in net exam is that universities have not taught these things. ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए चाहे डिक हैबिज हो या और बहुत सारे जितने भी राइटर्स हैं, आप जानते हैं रेमंड विलियम्स है, मैथ्यू अर्नल्ड है, और बहुत सारे थियोडोर एडोर्नो एंड ऑल दीज राइटर्स, ये स्टूडेंट्स को अननोन है. देखो बहुत पहले क्या हुआ था, आई टेल यू दिस व्हाट हैपेंड. बहुत पहले, इफ यू हैव सीन द कल्चर ऑफ रशियंस एंड फ्रेंच, द कल्चर ऑफ रशियन एंड फ्रेंच इज दैट व्हेन दे मीट यू, they don't shake hands, they will take your hand and they will kiss you, right? The Russians and the French, there are some open countries, you meet the women from another family, you hug and make a kiss. Can you do that in India? इंडिया में कर सकते हो, अरे नमस्ते आंटी, देना हाथ अपना, धुलाई हो जाएगी, धुलाई कुटाई रील्स वायरल हो जाएंगी पिटाई वाली. Different cultures, people living in a surrounding gradually develop the culture. The study of those cultures has evolved as culture study. तो चाहे यहाँ पे हम मेल गेज कॉन्सेप्ट पढ़ें, हाइपर रियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ें, सिमुलेक्रा सिमुलेशन पढ़ें, या फिर हम यहाँ पे जो सीसीटीवी कॉन्सेप्ट है, द सीसीटीवी कॉन्सेप्ट उसको पढ़ें बहुत अच्छे से. ये सब कल्चर स्टडीज का पार्ट है. Culture studies is not tough. The problem is it is not introduced in a proper way. You can watch my videos on YouTube. Culture study है, वहां पे देख के you can understand. अब देखो, literary criticism we have talked about. हमने इनकी ऑलरेडी बात की थी. क्रिटिसिज्म में स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है? स्टूडेंट्स जस्ट रीड एंड राइट डाउन 10-15 पॉइंट्स. नो, criticism is like philosophies, opinions, so there are some counterpoints given by the same writer. When you read criticism, my suggestion is, apart from the book, take the papers and read how Aristotle defines uh, imitation. What is the idea of Aristotle and Plato? What are the differences? What is the common factor between Horace, Plato and others? क्रिटिसिज्म में बुक के साथ पेपर्स पढ़ो. देन कम्स लिटरेरी थ्योरी. Normally, when I recommend Peter Berry, Raman Selden, and Krishnaswamy, it's not easy for the students to read and understand. So I recommend papers. जितने पेपर पढ़ सकते हो पढ़ो. Suppose I worked for 2 months, and after 2 months research, I published a paper. What is literary theory? You read that paper. My 2 months hard work and your 2 hours proper study, it will become same. You will have that knowledge. Focus on theory. Start from new criticism. And remember, new criticism, formalism, practical criticism, structuralism, Russian formalism, Russian, French formalism, post-structuralism, deconstruction, reader response, new historicism. इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरी हैं. You must go for the famous theory Gestalt. What is Gestalt theory? What is call and response theory? What is Stranger King theory? What is third space theory? Along with that, what is thing theory? Make sure you read and focus on all these. इनका लिस्ट बनाओ. लिटरेरी थ्योरी राइटर्स की लिस्ट, बुक्स एंड देयर टर्म्स, ये करो. अब आता है ये सबसे अननोन पार्ट. Most of the students get confused here. The research methods and materials in English. यहाँ पे I have a good news for you. It is just like paper one. Just like paper one. Paper one research. It just like paper one research hai. Simply what you have to do is take the references of English books in English. There is nothing new. Research methods and materials, nothing new. Totally paper one concept hai. But yes, MLA format 9 क्या है, MLA format का system क्या है, that you study in paper one, you can study here. From my side, this unit just needs 1 hour. 1 hour study is enough. ये आप कर सकते हो. I believe I have done justice. इसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं. See, एक चीज यहां पे है. If you start without any guidance, आपको सारी बुक्स अराउंड
40,000 पड़ जाएगा। अगर आप सारी बुक्स खुद लेके पढ़ोगे हर हाल में 40,000 पड़ जाएगा। 2-2,500 में आपकी डेविड डेचेस, विलियम जे लॉन्ग और क्रिटिसिज्म की बुक आएगी। Books of culture studies, books of language theories are costly books because not all the students read. Culture studies books graduation students नहीं करते हैं. Linguistic language portion graduation student नहीं पढ़ता है. English in India के history, it is the scholarly level things. All of these books will be like 800, 900. You will have to go for all the books. It will be around 40,000 approx. मेरे पास 7 लाख से ज्यादा की किताबें हैं, 7 लाख से ज्यादा की, 40,000. Now comes time. Will you be able to read those books and understand and make notes? Time कितना एग्जाम के लिए आपके पास? Around 6 months. Around 6 months. First, you will have to buy the books. Then you will have to read those books in a proper way, taking papers from internet. Then you will have to write down. And there will be a risk. What if you are not able to write in a proper way? So I suggest you can simply go for the correspondence course. If you're not able to make your own notes, we have notes available. मेरे अपने notes हैं, 15 booklets हैं, एक special set की booklet मिलेगी आपको. You can go for this or you can go for this. If you are from village background, if you think you are weak, if you think your English is not up to the mark, और यो आपको लगता है आपकी पढ़ाई में गैप है, अगर आप वीक हैं, इंग्लिश नहीं अच्छे से है, गैप है, गो फॉर पेन ड्राइव कोर्स. व्हाट इज पेन ड्राइव कोर्स? कोई स्पेशल चीज नहीं है, नथिंग स्पेशल. द स्टूडेंट्स 2019 बैच बिफोर कोविड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनके वीडियोस भी हैं पोस्ट कॉलोनियल वाले. दीज क्लासेस आर नाउ गेटिंग रिकॉर्डेड एंड विल बी शेयर्ड विद यू. जी हाँ, नाउ वी हैव हाई क्वालिटी कैमरा, अ लैपटॉप, एंड यू विल गेट द सेम लाइव क्लास एट होम. आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा. मीन्स इफ यू नॉट एबल टू वॉच लाइव, यू विल गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर. कौन सा लेक्चर? विच लेक्चर? ये वाला. इफ आई एंटर इन माई क्लास विल स्टार्ट. विनीत सर एंटर्ड, क्लास स्टार्ट. विनीत सर लेफ्ट, क्लास एंडेड. In between motivation, jokes, conversation, even if I'm taking tea, it will be recorded for you. No editing. कोई editing नहीं, कोई cut नहीं. Pure offline batch will reach to you. आपके डोर स्टेप पे आएगा. प्लस आपको ऑफलाइन क्लास में साथ पेपर 1 लेक्चर्स भी मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, सेम ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन पेपर 1, live classes access, along with this counselings plus Zoom session. Yesterday we did a Zoom session. There were so many students talking to me face to face first time. All these things will be given to you. ये आपको already share किया हुआ है. You can watch it. If syllabus changed, I will teach you free of cost. आपका सारा syllabus आपको free of cost पढ़ाया जाएगा. No change, nothing. कुछ भी नहीं होने वाला. Don't worry. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कुछ भी आ जाए, whatever, I will teach you. India में, if they change syllabus in India, who are going to teach that? The DU JNU people? I have taught in DU. I am highly connected to everyone. So even if I have to bring JNU professors, DU professors on request that please sir, please come in my class and explain things, we will do that. Syllabus change होगा, I take complete responsibility. Free of cost, सब कुछ दोबारा मिलेगा. Fees this much. Currently 700 students are registered. First 500 हो चुके हैं. If you want to go for it, if you make one time payment, अगर एक साथ करते हैं, आपको 6 months free मिलेंगे. 6 months plus 6 months, 12 months, January to December 2024 for one time payment. If you just want paper 1, separate price. You can go for these things. इसके बाद जब हमें मौका मिलेगा, we will go for complete paper discussion, complete syllabus discussion. We will teach you complete syllabus. आपको complete syllabus पढ़ाया जाएगा. These are the writers list and everything that will be shared with you. What to do? These are the details. Just if you have any query, कोई भी query left है, WhatsApp me. अगर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि कुछ करना है, पास करना है, बहुत हो गया, इस एग्जाम में पास होना है, क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 7th जनवरी, 7 जनवरी से क्लास स्टार्ट है. 7th Jan से क्लास स्टार्ट है. इन दिल्ली दिस फीस इज 52,700.
दिल्ली में इसकी फीस है 52,700। आपको मिल रहा है 35,000 में विद 1 ईयर मेंबरशिप। 8810289637, you can WhatsApp me. We are done with this. I hope I did justice with my narration. Your comments, your love, it motivates me to teach you more and more. In my coming lectures, we will talk about how to read these units separately. तो आपको मैं सेपरेट यूनिट्स के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून्ड, एंड द मोमेंट आंसर की इज रिलीज्ड आपको फास्टेस्ट बताऊंगा। आई विल बी अपलोडिंग ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच once again. A very happy new year to you, to your family members. Convey my regards to your parents and just say that there is a son in Delhi and he needs blessings. उनको बोलो पापा एक और बच्चा है, एक और बेटा है, दिल्ली में है, उसे आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।